Good morning, students. Economics, Standard 12, Chapter number 3, Money and Inflation. So, money, as you all know, is very much important. Okay, so it is the main center for all the economic activities in a modern world. To satisfy his or her needs, an individual requires money so that he can buy goods and services. Money is not only the medium of exchange, but it is also used to store the values. People can save money for their future needs. As you all know, human wants are unlimited, and a person cannot satisfy all wants by one's own produce. Thus, a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and services. पैसा दिया, सामान लिया, या सामान दिया, पैसा लिया. In ancient times, human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves. पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि जो गुड्स मैं बना रहा हूँ वो मैंने आपको दे दिया, जो गुड्स आप बना रहे हो आपने वो मुझे दे दिया. तो ये पहले चलता था, जिस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम. So, what do you mean by barter system? Barter system is a system of exchange जहाँ पे हम गुड सर्विसेज डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं किसी और के साथ विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे कि मनी. So, what are the limitations of barter system? In earlier years, individuals lived a simple village life. Yes, had less needs, carried out agriculture exchange of goods and services, which was sufficient for their subsistence. जीने के लिए बहुत important था. For example, a farmer cultivating wheat would store the required stock and would exchange the remaining wheat to get rice. जितना उसको खुद को चाहिए उतना लेगा, बाकी रख देगा, सामने wheat देके rice ले लेगा, cloth ले लेगा, shoes ले लेगा. Similarly, the shoemaker would get cloth and food, ghee by exchanging the shoes he made. Teachers used to get food in exchange of knowledge, and the artist would be patronized for their entertaining art. तो इस तरीके से exchange अंदर अंदर करके वो लोग रहा करते थे. Increasing population and socio-economic development resulted in an increase and change in demands, making them more specific हो गए. Industrialization, urbanization हुआ, division of labor हुआ, and specializations made the barter system limited and less capable. The mutual exchanges decreased. अब यहाँ पे exchange यहाँ पे काफ़ी कम होगा and the personal needs यहाँ पे बढ़ने start हो गए. So basically, what are the prominent limitations of barter system? So number one, problem of mutual adjustments of wants. जो चीज़ें मुझे चाहिए वो उसको देनी हो या जो मुझे देनी है वो उसको चाहिए हो, it is not always compulsory. The first problem was problem of mutual adjustment of wants. Second problem, difficulty in storing the value. पॉसिबिलिटीज आता है कि जो मुझे वो दे उसे मुझे स्टोर करना पड़े और मेरे पास वो स्पेस अवेलेबल नहीं हो, या जो मुझे मैं उसको दूँ वो उसको स्टोर करना पड़ेगा उसके पास अवेलेबल नहीं हो स्पेस यहाँ पे. ओके, और इसको मैं लंबे टाइम तक रख भी नहीं सकता. सपोज कि मैंने एक सिप एक्सचेंज किया इन टर्म्स ऑफ राइस. ओके, सिप की एक पर्टिकुलर एज लाइफ है. ओके, राइस की भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड है. ठीक है, वो जल्दी ख़राब हो सकती है वो भी. तो बोथ आर हैविंग ए स्टोरिंग वैल्यू वेरी लेस. ओके, कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना मेरे लिए पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है बीइंग एन ह्यूमन बीइंग. ओके, जब भी लिविंग बीइंग है लिविंग बीइंग को स्टोर करना पॉसिबल है. व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस ए लार्ज स्केल थ्रू वंस ओन एफर्ट्स, जब वो खुद बनाता है वो चीज़ों को यहाँ पे तो वो ये ट्राई करता है कि मैं जितनी जल्दी यहाँ पे एक्सचेंज यहाँ पे कर दूँ उतना अच्छा रहेगा ताकि मैं कुछ और सामान यहाँ पे खरीद यहाँ पे सकूँ. दैट इज अ प्रॉब्लम इन स्टोरिंग द वैल्यू. प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मतलब सपोजली क्या आई एम हैविंग क्लोथ जो मुझे एक्सचेंज करना है इन टर्म्स ऑफ वीट. तो 1 किलो वीट के सामने कितने मीटर कपड़े देने हैं वो तो मैं कभी डिसाइड कर ही नहीं पाता. या 1 मीटर कपड़े के सामने कितना राइस, 1 मीटर कपड़े के सामने कितना घी. तो वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. Okay, because common measurements was not there. Okay, so these are the basic limitations which were there in the barter system. So this led to the origin of money, which became a standard measure of value and a common denomination of trade. तो इससे पैसा आना पड़ा, पैसा लाना पड़ा. A common measurement हो. Now see people, now it is very easy. जेब में 10 रुपया, I know what is to be purchased and what not to be purchased. Okay ना? So money, evolution of money.
In order to simplify the produce of exchange and to introduce a universally accepted medium which satisfy the store of value function under the barter system, commodities and animals were used as a medium of exchange in India. Commodities and animals को पहले use किया करते थे. Agriculture being the major sector of the economy, there was a large production of crops of which the required stock stored rest of the crops were sold to buy the animals. ठीक है कुछ अपने पास रखते बाकी के animals खरीदने में लगा देते. When required, the animals could also be sold to get the goods. Animals को बेच के goods ले लिया, service ले ली, and even crops ले लिए in return में. In this way, animals like a horse है, cow है, buffalo है, ये exchange में मुझे काम आते थे in terms of in exchange of values for money and trading. The use of animals as a standard measure and a common medium of trade also become a limitation and cause difficulties चालू हो गई. Animals are mortal, मर जाते हैं. They get sick and die. Therefore, the storage of wealth in terms of value for money in the form of animals was not advisable. कि सही नहीं रहा. Thus, valuable minerals, stones were used instead of animals. इसके बाद ये चालू हुआ. At the onset of imperialism, the use of coin start हुआ यहाँ पे and a means of trade and exchange of goods and services into the kingdom. फिर यहाँ पे start हुआ coin और उससे exchange होना start हो गया. The only limitation was that they were used in limited societies and regions. कुछ जगह पे ये start किया गया था. Democracy and industrialization inspired the need for the modern money as a means of exchange. Democracy भी industrialization की वजह से यहाँ पे modern money introduce करना इन्होंने start यहाँ पे किया. By the support of central government, the money became widely acceptable as a means of exchange. Central government ने support किया और money बन गया एक widely acceptable means of exchange, जाके हम goods service यहाँ पे ले सके और money सामने से यहाँ पे दे सके. Money also succeeded in overcoming the limitation of storage of value. Store नहीं करना पड़ता, जितना बनाओ बनाओ और जाके मार्केट में आके बेच दो, अपने लिए रखो, बाकी का मार्केट में बेच के और पैसा ले लो. The advent of banking system made it easier. बैंक आ गया, अब तो और भी easy होगा ट्रांसफर करना, स्टोर करना पैसा है पे. So now in the next topic I will be explaining you the meaning and the function of money.